नमस्कार। माइंस रूल की 6th चैप्टर फर्स्ट एड मेडिकल अप्लायंसेस लेकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर किरबूर के ओर से मैं रथिन विश्वास इस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। इससे पहले हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स की प्रिलिमिनरी कमिटी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर्टिफिकेट सर्जन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस ऑकमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमिटी और हेल्थ एंड सैनिटरी प्रोविजन अलग अलग वीडियो में जाने हैं। आज हम लोग फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंस जिसमें रूल 40 से 45A तक है उसके बारे में जानेंगे। रूल 40 अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स इन फर्स्ट एड etc. 41 first aid qualifications, 42 first aid personnel, 43 first aid rooms, 44 first aid stations, 45 carrying of first aid outfit by officials, and 45A medical attention in case of injury। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ सैंपल क्वेश्चन इसका जानेंगे। Arrangement for training persons in first aid C. It shall be the duty of the owner, agent, or manager of a mine to see the adequate and suitable arrangement are made for training of persons in first aid and provision of such equipment as in prescribed in this rule। ये ओनर एजेंट और मैनेजर का ड्यूटी है एडिक्वेट एंड सुटेबल अरेंजमेंट करना फर्स्ट एड ट्रेनिंग के ऊपर। It shall be the duty of owner, agent, or manager should the adequate and suitable arrangement made for speedy removal from the mine dispensary or hospital of a persons employed in mine who, while on duty, suffers from serious bodily injury or illness of serious nature। ये ओनर एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी रहेगा एडिक्वेट और सुटेबल नंबर के अरेंजमेंट करने के लिए लोगों को सुटेबल स्पीडी रिमूवल करने के लिए माइंस डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल ले जाने का इसके ऊपर प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। अनलेस अदरवाइज अप्रूव्ड बाय इन ऑर्डर in writing of chief inspector or an inspector and subject to such condition as may be specified therein, arrangement for the purpose in clause A shall be by means of proper ambulance van, and in case of such ambulance van is not readily available in spite of proper and timely requisition, it may be by other suitable motor vehicle in which persons can be taken in a spine condition on a stretcher। ये जो अरेंजमेंट है जिसके लिए स्पीड रिकवरी के लिए हॉस्पिटल या माइन डिस्पेंसरी में ले जाने का, इसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंस होना चाहिए। अगर एम्बुलेंस नहीं है तो अदर कोई प्रॉपर सुटेबल मोटर व्हीकल होना चाहिए या इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से प्रॉपर अप्रूवल लेना चाहिए। First aid qualifications. No persons other than qualified nurse, dresser, compounder, dresser or medical practitioner shall be appointed to render first aid or to be in charge of first aid stations referred in rule number 44 unless he is holder of a valid first aid certificate of the standard of St. John Ambulance Association India। क्वालिफाइड नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर कम ड्रेसर और मेडिकल प्रैक्टिशनर छोड़ करके किसी ने को फर्स्ट एड नहीं देगा और अनलेस पर्सन सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से क्वालिफाइड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लिया है या
उन्होंने इस टाइप क्वालिफिकेशन नहीं होने से वो फर्स्ट एड स्टेशन का इंचार्ज भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट एड पर्सनल, the owner, agent or manager of a mine shall see every first aid station provided under Rule 44 in place during every working shift in charge or a persons holding qualification specified in Rule 40 on. The person in charge of first aid station in any shift should be readily available throughout the shift. Name and designation of every person appointed to be in charge of first aid station shall be prominently displayed at every first aid station. An up-to-date list of persons appointed to be in charge of first aid station in the mine shall be kept in the office of the mine and also displayed prominently at the first aid room. हर वर्किंग शिफ्ट में जो फर्स्ट एड के फर्स्ट एड स्टेशन का इंचार्ज रहेंगे उनका वो क्वालिफिकेशन से जिसमें रूल 41 में बताया, अर्थात या तो वो नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर कम ड्रेसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। ये उन्होंने सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर होंगे और वो पूरा शिफ्ट अपना फर्स्ट एड स्टेशन में आना चाहिए और एवरी सच पर्सन की नाम डेजिग्नेशन प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए और इसका अपडेटेड लिस्ट ऑफिस में होना चाहिए और प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम at every mine employing more than 150 persons on any day of the preceding calendar year, there shall be provided and maintained in good order a suitable first aid room. जहाँ 150 आदमी से ज़्यादा आदमी काम करते हैं उस माइंस में एक suitable first aid room होना चाहिए। The first aid room shall be situated at a convenient place, situated in a convenient place on the surface of the mine and shall be used only for first aid work. ये first aid room माइंस की सरफेस में एक कन्वीनियंट प्लेस में होना चाहिए और केवल फर्स्ट एड के लिए ही वो यूज होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम shall have floor space not less than 10 square meter and shall contain at least equipment specified in second schedule। और ये फर्स्ट एड रूम की जो फ्लोर स्पेस है 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए और सेकंड शेड्यूल में वर्णित जो इक्विपमेंट है वो वहाँ होना चाहिए। The first aid room shall be in charge of qualified medical practitioner where the number of persons ordinarily employed in a mine more than 1000. Thus medical practitioner shall be full-time employee of the mine। और ये फर्स्ट एड रूम जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में होना चाहिए और उन्होंने माइंस की फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। Medical practitioner referred in clause A shall be assisted by a nurse and a dresser or a compounder and a dresser who are qualified in allopathic system of medicine। और ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं इनके अंदर में एक नर्स, ड्रेसर और कंपाउंडर एंड ड्रेसर होना चाहिए जो लोग एलोपैथी में मेडिसिन में क्वालिफाइड हो। Whenever the chief inspector feels it's necessary, he may require by an order in writing that such number of additional nurses or compounders or dressers shall be appointed to assist medical practitioner as may be specified by him। और चीफ इंस्पेक्टर इसका नंबर ऑफ नर्स, कंपाउंडर एंड ड्रेसर्स की से ज़्यादा भी करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। The nurse, compounder or dresser referred in clause B shall be full-time employee of the mine and shall be readily available
at the first aid room throughout the period when the persons work at the mine, provided that wherein conformity with any other law in force or otherwise an adequately equipped hospital or dispensary belonging the owner of the mine or to any mines welfare organization is provided and maintained at or in the immediate vicinity of the mine, the chief inspector or inspector authorized by him in this behalf may grant exemption from provision of this sub-rule subject to such condition as he may specify in writing. जहाँ पे एक हॉस्पिटल है अदर माइंस ओनर के द्वारा या माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माइंस की विसिनिटी में वहाँ डिजीमेंस एग्जामिशन दे सकते हैं. Every person who suffers an injury during the course of work shall report for examination or treatment at the first aid room, hospital or dispensary as case may be before leaving the mine, irrespective of first aid have been rendered at or near the place of work. अगर किसी लोगों को इंजरी होता है तो उनको फर्स्ट एड रूम हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में रिपोर्ट करना है माइंस छोड़ने से पहले. फर्स्ट एड स्टेशन. Every mine there shall be provided and maintained first aid equipment as prescribed in the third schedule at conveniently suitable stations where injured persons may receive first aid treatment as follows. थर्ड शेड्यूल के नित जो प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के साथ हर एक माइंस में फर्स्ट एड स्टेशन होना चाहिए. Above ground, a first aid station, the top of every shaft or incline where men and materials are normally earned or hurled. Every place, every screening plant or loading plant, every other place where more than 50 persons are employed at one time, or every open cast working on first aid station for every 50 persons or part thereof employed on time. And फर्स्ट एड स्टेशन हर एक माइंस में होना चाहिए जहाँ थर्ड शेड्यूल के बढ़ने इक्विपमेंट है वो रहना है. अबव ग्राउंड में जहाँ टॉप वर्कशॉप स्क्रीनिंग प्लांट लोडिंग प्लांट और जहाँ पे 50 आदमी से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ होना चाहिए. ओपन का स्टॉकिंग में हर 50 आदमी के लिए एक से होना चाहिए. अंडरग्राउंड at bottom of every shaft where main and materials are normally owned and near every plant, near the drive end of every haulage, in or at entrance of every district or section the mine, provided that nothing in sub-rule shall constitute or require to provision of the first aid station within 300 meter of another first aid station. और ये 300 मीटर के अंदर दूसरा करने का जरूरत नहीं है. It shall be the duty of persons appointed to be in charge of first aid station under Rule 42. See that the equipment provided at the station is kept good order and this is replenished whenever necessary. और जो फर्स्ट एड स्टेशन के इंचार्ज होंगे उनका ड्यूटी है ये देखना जो इक्विपमेंट रखना गया है फर्स्ट एड स्टेशन में वो रिप्लेनिश हो रहा है जब जब जरूरत है. An up-to-date list of first aid stations provided in the mine shall be kept in the office of the mine and also displayed prominently at first aid room. First aid room में ये डिस्प्ले होना चाहिए कहाँ कहाँ फर्स्ट एड स्टेशंस हैं और इसका लिस्ट माइंस ऑफिस में होना है. Carrying the first aid outfit by officials.
Notwithstanding anything contained in Rule 42, every overman, foreman, shorter, mate, shotfarer, blaster, electrician, and mechanic in a mine shall hold the first aid qualification specified in Rule 41 and shall carry, while on duty, a first aid outfit consisting on large sterilized dressing, on a small sterilized dressing, and an ampoule of tincture of iodine and other suitable antiseptic, and such outfit shall be securely packed to protect it against dirt and odor. Every overman, foreman, shorter, mate, shotfarer, blaster, electrician and mechanic फर्स्ट एड आउटफिट कैरी करेंगे अपने साथ ड्यूटी की तरह. Medical attention in case of injury. Every person receiving an injury in the course of his duty shall, as soon as possible, report the same to an official. Where the person receiving an injury is not in a position to report the same to an official, it shall be duty of the persons who first comes to know of it to report the same to an official. The official shall make such arrangement for rendering first aid to the injured as may require. If, in opinion of the official, the injury is of such nature as to require immediate attention by medical practitioner, he shall arrange for the medical practitioner to be called. If an official who required to carry first aid outfit under Rule 45 received information about injury of a person, he shall himself attend to the injured person. It shall be the duty of person in charge of nearest first aid station provide under Rule 44 to render such first aid to injured person as may be necessary. किसी को अगर चोट लगने से वो इमीडिएट कोई ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेंगे. अगर वो इन्फॉर्म करने का पोजीशन में नहीं है, जो सबसे पहले इस चोट को जानेंगे उन्होंने इन्फॉर्म करेंगे और ऑफिशियल्स का ड्यूटी रहेगा उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का. और इमीडिएट अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर की अटेंशन का ज़रूरत है तो वो भी अरेंज कराएंगे. जो ऑफिशियल फर्स्ट एड आउटफिट कैरी कर रहे हैं उनका उन्होंने इस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने के लिए जाएंगे और नियरेस्ट फर्स्ट एड स्टेशन की जो इंचार्ज हैं उनका ड्यूटी रहेगा उस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का. ये हम लोग कुछ इसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. एट एवरी ओपन कास्ट माइंस there shall be provided and maintained first aid station in a scale upon every dash person employed 50, 80, 100, 120, 150, 50 persons. You can see it in Rule 44. Every open cast working first aid station for every 50 persons or part thereof employed at any one time. Next. Which of the following shall carry first aid outfit under Rule 45? Foreman, mate, blaster, electrician, mechanic. A and B only, A, B and C only, A, B, C and D only, A, B, C, D and E. Everyone? A, B, C and E only. Correct answer is everyone here. Foreman, mate, blaster, electrician, mechanic. See it in Rule 45. In every mine, there shall be provided and maintained sufficient number of respective the persons employed in the mine. Urinal, latrine, first aid station, first aid room. A and B, B and C, A and D,
C only. A, B, C, D. A, B, and C. First aid stations. First aid room is required where more than 150 persons are working. So surface Latin individual for every mines it's required. First aid station every mine is required, but first aid room is required when number of persons more than 150. Thank you.